सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात के अंधेरे में पैसेंजर से भरे 4 एयरक्राफ्ट्स टेक ऑफ करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने नोटिस किया कि एक जहाज लैंड करने के लिए तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। उसने एटीसी से लैंडिंग की परमिशन मांगी और एटीसी ने उसको परमिशन भी दे दी। पहले तो चारों जहाज़ों के पायलट्स को लगा कि शायद ये उनकी गलतफहमी है। करीब आकर वो अपने आप को खाली रनवे के साथ अलाइन कर लेगा, लेकिन जैसा वो सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं था। लैंड करने वाला जहाज कहीं और नहीं बल्कि सीधा उन चारों से आकर टकराने वाला था। ज़ेम-टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये खौफनाक वाकया ज्यादा पुराना नहीं जब 7 जुलाई 2017 को एयर कनाडा का जहाज ACA 759 टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 135 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स के साथ टेक ऑफ करता है। ये एक रूटीन फ्लाइट थी जिसको 5 घंटे और 30 मिनटों में सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करना था। दोनों पायलट्स काफी एक्सपीरियंस्ड थे, जिन्होंने पहले भी कई बार सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे लैंड किया हुआ था, लेकिन आज का दिन इनके लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था और ये आने वाले वक्त में एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक एग्जाम्पल बनने जा रहा था। सारा सफर बिल्कुल ठीक ठाक गुजरा और जब एयर कनाडा 759 सैन फ्रांसिस्को के करीब पहुंची तो उन्होंने लैंडिंग के लिए अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर दी। इस काम के लिए वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर की परमिशन का वेट करने लगे। आपको यहाँ बताते चलें कि सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे टोटल 4 रनवेज हैं, पर एट अ टाइम सिर्फ 2 ही ऑपरेट किए जा सकते हैं। अगर हवा की डायरेक्शन साउथ से आएगी तो इन दोनों रनवेज को लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए खोला जाता है, और अगर हवा वेस्ट से आ रही हो तो फिर ये 2 रनवेज इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बात तो हम सबको मालूम है कि प्लेन को हवा के अगेंस्ट टेक ऑफ या लैंड करवाया जाता है। आज के दिन हवा वेस्ट से आ रही थी, इसी वजह से प्लेन को हवा के अगेंस्ट लैंड कराने के लिए इनमें से किसी एक रनवे को इस्तेमाल किया जाना था, जिनके नाम 28L और 28R हैं, यानी 28 लेफ्ट और राइट। अभी तक जो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था वो अब बिगड़ना शुरू हो गया। रनवे 28L मेंटेनेंस के लिए बंद किया हुआ था और इसी वजह से उसकी लाइट्स भी ऑफ थी। कंट्रोल टावर ने एयर कनाडा 759 को साथ वाले रनवे 28R पर लैंडिंग की परमिशन दे दी। क्योंकि दोनों पायलट्स पहले भी इस एयरपोर्ट पर कई मर्तबा लैंड कर चुके थे, इसी वजह से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको रनवे की 2 पैरेलल लाइट्स नजर आएंगी, जिनमें से उनको राइट वाले रनवे पे लैंड करना है, और यहीं पर इनसे हुई पहली गलती। इन दोनों रनवेज के साइडों पे 2 टैक्सी वेज हैं जिनको ग्रीन कलर किया हुआ है। टर्मिनल से पैसेंजर्स लोड करने के बाद जहाज इन टैक्सी वेज के जरिए ही रनवे तक आते हैं, पर रात के अंधेरे की वजह से एयर कनाडा 759 के पायलट्स टैक्सी वे की लाइट्स को 28R समझ बैठे और जो असल में 28R की लाइट्स थीं उनको वो 28L समझ रहे थे। पर जो इससे भी बड़ा खतरा था वो तो अभी तक पायलट्स को मालूम ही नहीं था। जी हाँ, राइट टैक्सी वे पर 4 फुली लोडेड जहाज टेक ऑफ करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। 3 यूनाइटेड वन एयरलाइन के जहाज थे और एक फिलीपीन एयरलाइंस का जहाज था। इन चारों में टोटल 1000 से भी ज्यादा पैसेंजर्स थे और इनमें फ्यूल भी फुली लोडेड था। रनवे 28R और टैक्सी वे के बीच सिर्फ 100 मीटर्स का फासला है। एयर कनाडा 759 ने जब खुद को टैक्सी वे के साथ अलाइन कर लिया तो दूर कंट्रोल टावर में से देखने पर यह अंदाजा लगाना काफी मुश्किल था कि वो असल में कहां लैंड करने जा रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि रनवेज का मेंटेनेंस के लिए बंद होना एक नॉर्मल बात है, तो ये चीज एयर कनाडा 759 के पायलट्स को क्यों नहीं बताई गई थी? क्योंकि अगर उनको इस बात का इल्म होता तो ये कंफ्यूजन सिरे से होती ही नहीं। रनवे 28L के बंद होने वाली इंफॉर्मेशन नोटैम्स में मेंशन की गई थी। नोटैम्स यानी नोटिसेस टू एयर मिशंस ऐसे नोटिसेस होते हैं जिसमें फ्लाइट के टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक की तमाम इंफॉर्मेशन लाइन से लिखी होती है, और हकीकत में इनमें से इम्पोर्टेंट नोटिसेस को पॉइंट आउट करना इतना आसान नहीं होता।
इसी वजह से 28L के बंद होने वाला नोटिस पायलट से मिस हो गया और ये थी उनकी दूसरी बड़ी गलती। एयर कनाडा 759 तेजी से रनवे यानी टैक्सीवे के लिए बढ़ रही थी। कंट्रोल टावर ने उनको विजुअल अप्रोच से लैंड करने की परमिशन दी थी, जिसका मतलब होता है कि उनको रनवे खुद ढूंढकर जहाज को मैनुअली रनवे से लाइन अप करना है। नॉर्मली जब मौसम ठीक होता है तो विजुअल अप्रोच की परमिशन ही दी जाती है, लेकिन क्योंकि पहले भी कई मर्तबा ऐसे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं जिसमें पायलट्स विजुअल अप्रोच में सही से जज नहीं कर पाते और कहीं और लैंड कर बैठते हैं, इसी वजह से ज्यादातर पायलट्स विजुअल अप्रोच के दौरान भी इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस सिस्टम का सहारा लेते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस सिस्टम एंड टाइम तक पायलट्स को बताता है कि वो सही रनवे पर लैंड कर भी रहे हैं या नहीं। इस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए इसमें रनवे नंबर ऐड करना पड़ता है। वैसे तो आजकल के मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स खुद ही गाइडेंस सिस्टम एक्टिवेट कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये एयरबस A320 था जिसमें गाइडेंस सिस्टम को मैनुअली एक्टिवेट करना था, जो कि पायलट्स ने किसी वजह से नहीं किया और ये थी पायलट्स की तीसरी बड़ी गलती। पर आखिर पायलट्स एक के बाद एक गलती क्यों कर रहे थे? असल में दोनों पायलट्स का ये काफी बड़ा दिन था। इस वक्त रात के 11:45 हो रहे थे और दोनों ने पिछले 19 घंटों से कोई खास रेस्ट नहीं किया था। ये दोनों कैनेडियन पायलट्स थे और उस वक्त कैनेडियन पायलट्स के फटीग रूल्स भी यूएस के मुकाबले में ज्यादा सख्त नहीं थे। एयर कनाडा 759 के पायलट्स की तो 3 गलतियां हमने पॉइंट आउट कर ली, लेकिन उन 4 प्लेन्स का क्या जो देख भी रहे थे कि एयर कनाडा रनवे की तरफ नहीं बल्कि टैक्सीवे की तरफ बढ़ रहा है और फिर भी कंट्रोल टावर को नहीं बता रहे थे। असल में सबको मालूम था कि सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे विजुअल अप्रोच के दौरान प्लेन को थोड़ा मजीद राइट साइड से लाना होता है, क्योंकि अगर 28R की सीध में प्लेन आएगा तो उसको सैन फ्रांसिस्को के फॉस्टर सिटी एरिया के ऊपर से गुजरना होगा। आबादी के ऊपर नॉइज पोल्यूशन ना हो, इसी वजह से पायलट्स रनवे से करीब आकर खुद को अलाइन करते हैं। चारों पार्क्ड जहाज़ों के पायलट्स के लिए ये एक नॉर्मल बात थी, इसी वजह से किसी ने भी कंट्रोल टावर को रिपोर्ट नहीं किया। पर जब एयर कनाडा का जहाज और ज्यादा करीब आ गया और खुद को 28R के साथ अलाइन नहीं किया तो फिलीपींस एयरलाइन के जहाज ने एहतियातन अपनी लैंडिंग लाइट्स ऑन कर दी ताकि लैंड करने वाले प्लेन को नजर आ सके कि यहाँ पर पहले से 4 प्लेन्स खड़े हैं। उधर एयर कनाडा 759 के पायलट्स को टैक्सीवे पर, जिसको वो 28R समझ रहे थे, कुछ लाइट्स नजर आई। दोनों पायलट्स को कुछ ठीक नहीं लगा तो उन्होंने फौरन कंट्रोल टावर को ये रेडियो मैसेज किया। Tower, just want to confirm this, Air Canada 759, we see some lights on the runway there, runway clear left. कंट्रोल टावर ने उसी वक्त उनको रिप्लाई किया कि 28R पर कोई नहीं है और वो बिल्कुल खाली पड़ा है, आपको लैंड करने की परमिशन है। Air Canada 759, confirm clear to land runway 28 right, there is no one on 28 right, flight 0. असल में कंट्रोल टावर को भी इल्म नहीं था कि वो 28R पर नहीं बल्कि टैक्सीवे पर लैंड करने वाला है। नॉर्मली इस सिचुएशन के लिए एक और कंट्रोलर भी होता है जो कि ग्राउंड पर ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, लेकिन क्योंकि ये रात का वो वक्त था जब ट्रैफिक इतनी ज्यादा नहीं थी, इसी वजह से सिर्फ एक ही कंट्रोलर ये सब कुछ मैनेज कर रहा था। खुशकिस्मती से वेटिंग में खड़े पायलट्स एयर कनाडा और कंट्रोल टावर की इस कन्वर्सेशन को सुन पा रहे थे। उनको भी ये समझ नहीं आ रहा था कि इतना करीब पहुंचने पर भी एयर कनाडा रनवे से अलाइंड क्यों नहीं है। अब आखिरी चंद सेकंड्स बचे थे। वेटिंग में खड़े पायलट्स को अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। उनको कंफर्म हो गया कि एयर कनाडा टैक्सीवे को ही रनवे समझ रहा है। सबसे आगे खड़े यूनाइटेड 1 के पायलट ने अपना कॉल साइन बताए बगैर फौरन कंट्रोल टावर को ये मैसेज किया। इसके जवाब में कंट्रोल टावर ने एयर कनाडा को फौरन गो अराउंड का मैसेज रिले किया। जब तक एयर कनाडा को ये मैसेज मिलता, वो लाइन में खड़े तीसरे जहाज से सिर्फ चंद फुट ऊपर थे। खुशकिस्मती से उन्होंने फौरन रिएक्ट किया और लिवर को ऊपर करके वापस एल्टीट्यूड गेन कर गए।
सिर्फ 1 और सेकंड का डिले होता तो अभी जो आपने देखा ये एविएशन की हिस्ट्री में सबसे बड़ा हादसा कहलाया जाता। 1000 पैसेंजर्स पार्क प्लेन्स में बैठे थे और 135 पैसेंजर्स एयर कनाडा में। इन सारे जहाज़ों में फ्यूल फुली लोडेड था और फिर जो होता उसको कंट्रोल करना भी काफ़ी मुश्किल होता। इस इंसिडेंट के बाद फुल इन्वेस्टिगेशन की गई जिसमें ये साबित हुआ कि एयर कनाडा 759 के पायलट्स गलती पर थे, क्योंकि ना ही उन्होंने इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया और ना ही नोटैम्प्स पर मेंशन किए हुए नोट्स को पढ़ा। इसके अलावा नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट के लिए नए रूल्स बनाए जिसमें जब एक रनवे बंद होगा तो विजुअल अप्रोच की परमिशन नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ ऑफ पीक आवर्स में एयर ट्रैफिक के साथ साथ ग्राउंड ट्रैफिक कंट्रोलर का भी होना लाजमी करार दे दिया गया। A Boeing 767 cargo plane was coming from Memphis and arrived in the early morning hours in Austin. As happens so often in Austin, the ground is covered with a thin layer of fog, just about 1,000 feet thick but very dense. They are still high above that fog layer, enjoying a clear sky, but they will have to dive through it for their landing. Austin Tower, FedEx 1432 Heavy, passing 5.4 for that. Cat 3 ILS 18 left. Due to the low visibility, FedEx 1432 had to execute what is called a Category 3 instrument approach, a procedure applied at very low visibility and clouds reaching almost to the ground. For such approaches, the auto-land system of the airplane is used and the flight crew only monitors the correct operations of all systems. This in itself is just routine for the flight crew and nothing unusual. FedEx 1432 Heavy, Austin Tower, 18 left RVR, touchdown 1,400, midpoint 600, roll out 1,800, 18 left, clear to land. The RVR value given by the tower controller denotes the visibility in feet at 3 different points along the runway, near the touchdown point, the middle, and the end. The phrase passing 5.4 means that they are 5.4 miles away from the ILS transmitter, which sits at the end of the runway. At just this moment, Southwest 708 calls in. Tower, Southwest 708, we're short of 18 left, we're ready. Southwest 708, Austin Tower, runway 18 left, RVR 1,200, midpoint 600, roll out 1,600. Flight heading 170, runway 18 left, clear for takeoff, traffic 3 mile final is a Heavy 767. Okay, 170, clear for takeoff, 18 left, copy the traffic, Southwest 708. The tower controller's intention is to have the Southwest flight take off on the same runway before the FedEx lands. 3 miles is usually a comfortable spacing to let a departure slip in front, and the phrase "traffic on 3 mile final is a Heavy 767" is to inform the Southwest crew about the incoming FedEx plane, which requires them to do a speedy departure. But things take longer than expected. Time is ticking as the FedEx is entering the fog layer, not able to see anything out of their cockpit windows anymore. Their distance to the runway has now shrunk to merely 1.2 miles, and they are becoming nervous about the Southwest still sitting on the runway. Tower confirm, FedEx 1432 Heavy, clear to land on 18 left. FedEx 1432 Heavy, that is affirmative, sir, 18 left, you are clear to land, traffic departure, roger, route to 737. Roger. 60 seconds have now passed since the tower gave Southwest 708 the takeoff clearance, and apparently they are still standing at the threshold. Although there is no fixed time limit for starting the takeoff roll, it is expected that pilots perform the takeoff in an expeditious way. Southwest 708, confirm on the roll. Rolling now. Meanwhile, FedEx is descending through the fog layer and highly concentrated to look for the approach lights that show up. At about 150 feet above the ground, the fog clears up a bit and they can make out the lights of Southwest 708 still on the runway, rolling but yet very slow. They immediately initiate a go-around and they address the Southwest crew directly. Southwest aboard.
FedEx is on the go. Southwest 708, roger, you can turn right when able. The tower's transmission is the result of a misunderstanding, as he assumed the abort message had come from Southwest, which was informing them about aborting their takeoff run. Negative. The Southwest crew, however, was probably already beyond their V1 speed, and rejecting the takeoff would have been dangerous. As they were busy, they simply answered negative. This exchange shows just how confusing things can get very quickly. Both planes come within 100 feet of each other, but the FedEx is able to outclimb the departing Southwest plane. Normally, one aircraft is not allowed to give instructions to another. The fact that the FedEx crew did shows the severity of the situation. After the tower controller got things sorted out, he takes active control again and gives instructions to both airplanes that keep them separated. 1432, climb maintain 3000, when able you can turn left heading 080. Wind turn to 0803000, FedEx 1432 Heavy. Southwest 70, you can turn left heading 170. 170, South 79. Two airplanes should never come this close in such a situation. At the same time, the sequence of events also shows that several procedures did work in avoiding a collision. Whether by directly seeing the Southwest on the runway or a warning of the TCAS system, the FedEx crew took timely action to stay separated from the other aircraft. This 1432 Heavy, roger, sir. You have our apologies. We appreciate your professionalism. Thank you. Was it a wise decision to let Southwest go in front of FedEx while they were on a 3-mile final? In hindsight, the answer is probably no. Particularly not at a time of very low traffic, where a short 2-minute delay for Southwest 708 would have taken all the stress and risk out of the situation. On the other hand, Southwest pilots are known for their proficiency and expeditious takeoffs. Thousands of other times, such a takeoff clearance has already worked just fine. When it comes to the ultimate question of responsibility, the full NTSB investigation will decide about that. Since the beginning of the year, 8 cases of one-way incidents have been reported, 3 of which have already been classified as Category B. At what point it is no longer a statistically plausible accumulation, but a serious problem, is difficult to say. At least to some degree, the current media attention is highlighting something that has always happened. All of this is to prevent a repeat of history. If you look at a list of the deadliest aviation accidents that ever happened, the number 1 spot isn't a high-altitude crash, but rather 2 planes colliding on the runway. This accident occurred in 1977 between a KLM and a Pan American flight. Both planes were 747s, at the time the largest passenger plane in the world. In the cockpit of the KLM sits one of the airline's most experienced pilots, who even appears in the company's advertising. The weather had deteriorated massively, and the 2 planes did not see each other, nor could the tower controllers see the aircraft. While the Pan Am is taxiing down the runway, the KLM is lining up for their departure. And with the pilot under the wrong assumption that the runway is clear, they start rolling. How it came this far is a fascinating story, which is why I have produced another full-length video about this crash, creating detailed models and mapping out where exactly things went wrong. KLM 4805 is now ready for takeoff, and we're waiting for our ATC clearance. This video is part of my ongoing Nebula Original series, Under Exposure, in which I explore topics that could not work on YouTube. That is because, on one hand, they are violent subject matters that would get demonetized or perhaps even age-restricted. For example, I produced a video about the investigation into Flight MH17 that was shot down over Ukraine. Or another video about the Bin Laden raid.
following the operation that stormed his compound. The other reason why these videos couldn't work on YouTube is because they are made for the big screen. Videos that are not made for the YouTube algorithm, but unrushed storytelling. And since Nebula is a subscription service, I get to put higher budgets into the production of this series. Nebula is a creator-owned streaming service. And besides my videos, you can watch exclusive videos from lots of other independent creators. So go to nebula.tv/neo and make sure that you use that very link so that you get 40% off on an annual plan. All my exclusive videos are up there, so thanks for the support and thanks so much for watching this video. NTSB investigators have documented the final settings for many of the instruments in the cockpit. They discover that the autopilot was set to maintain an altitude of 2,000 feet. So why didn't it? Maintenance expert Angelo Donadeo is interviewed. All he can tell investigators is the crew was trying to fix a light bulb before the crash. Within days, the plane's 2 black boxes are recovered. Investigators hope they will provide some answers. Before they can extract the data, flight engineer Don Repo dies in hospital. Ron Infantino is given some devastating news of his own. The body of his wife Lily has been found under the plane's wing. She was just a wonderful person. I was 27 years old and she was the same age, and it was actually my first love. Infantino is haunted by the memory of switching seats with Lily just before the crash. They had swapped seats quite casually earlier during the flight when she had gotten up to go to the restroom. She was thrown into the swamp and drowned, and he lived. The swamp proves both a blessing and a curse for survivors. That's what saved most of the lives, actually. Because the plane broke up, it absorbed all the energy. And the mud absorbed it, and the plane just dispersed. The swamp water is so thick with mud, it also clogs survivors' wounds, preventing many from bleeding to death. But there's a deadly new threat facing some survivors. Their wounds have become infected, contaminated by a deadly organism found in the black mud of the Everglades. The organism produces an infection called gas gangrene. It can kill a person in just 2 days. Gas gangrene can only be destroyed in a hyperbaric chamber. It's a pressurized container that gets filled with high levels of oxygen. The oxygen gets forced into the wounds and kills the bacteria. 8 of the surviving passengers are infected with gas gangrene. Hyperbaric chambers must be found for all of them. The only other way to save patients is to amputate the infected limb. Ron Infantino's arm is badly infected. Doctor came in and says, well, we've diagnosed it as gas gangrene. He says, we got to take your arm off immediately or I have to get you to a hyperbaric chamber. Unfortunately, he says, the only hyperbaric chamber is at Mercy Hospital, and that's all been taken advantage of. Unless doctors can find a chamber soon, Infantino will lose his arm. While doctors search for a chamber for Ron Infantino, investigators examine what's left of the plane. They test its flight controls, engines, instruments, and its electrical and hydraulic systems. The plane was virtually new. It was in perfect condition. There was no mechanical reason found that would have caused the crash. In fact, some parts of the plane are in such good condition that the NTSB gives them back to Eastern Airlines so they can be installed on other airplanes in its fleet.
An unused hyperbaric chamber is finally found for Ron Infantino at a Navy base in Panama City. He spends 40 hours in the chamber. The pressurized oxygen kills the bacteria and saves his life. Gentlemen, we have 3 causes of the crash to explore. A state-of-the-art jetliner plunged 2,000 feet without the crew noticing. Investigators know the plane was mechanically sound. They now focus on other possible reasons for the unobserved descent. At the top of the list is subtle incapacitation of the pilot. The autopsy of Captain Bob Loft has yielded a gruesome discovery. Captain Loft had a large, undetected tumor growing in his brain. It pressed into the part of his brain responsible for sight